तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो नमः। गतकक्षायाम् अस्माभिः क्रियापदस्य लङ्लकारः दृष्टः। परस्मैपदी क्रियापदस्य रूपं भवति इति धातोः कुर्मश्चेत् अभवत्, अभवताम्, अभवन्, अभवः, अभवतम्, अभवत, अभवम्, अभवाव, अभवाम इति रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदिनः धातुनः लङ्लकारस्य रूपाणि पश्यामश्चेत् सेवते इति धातोः असेवत, असेवेताम्, असेवन्त, असेवथाः, असेवेथाम्, असेवध्वम्, असेवे, असेवावहि, असेवामहि इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। अधुना अग्रिमः पाठः वर्तते। अग्रिमे पाठे नूतनानि नामानि आरप्स्यन्ते। नवदशे पाठे अथवा एकोनविंशतिः पाठे तत्र ऋकारान्त पुल्लिंग नाम अस्ति कर्तृ। कर्तृ इति पदं पुल्लिंगे कथं भवति इति चेत् कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारं, कर्तारौ, कर्तॄन्, कर्त्रा, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः, कर्त्रे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, पंचमी कर्तुः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, षष्ठी कर्तुः, कर्त्रोः, कर्तॄणां, सप्तमी कर्तरी, कर्त्रोः, कर्तृषु, हे कर्तः, हे कर्तारौ, हे कर्तारः इति पुल्लिङ्ग। नपुंसकलिङ्गे कथं भवति कर्तृ, कर्तॄणि, कर्तॄणि इति इमानि एकवचने तथा द्विवचने रूपाणि कर्तृ, कर्तॄणि, कर्तॄणि, कर्तृ, कर्तॄणि, कर्तॄणि, कर्तृणा, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः, कर्तृणे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, कर्तृणः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, कर्तृणः, कर्तृणोः, कर्तॄणां, कर्तॄणि, कर्तृणोः, कर्तृषु इति इमानि अस्य रूपाणि भवन्ति। तथा गुरुशब्दः अस्माभिः पूर्वमेव कंठस्थीकृतः आसीत्। गुरुः गुरु गुरवः, गुरुं गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुरुवोः गुरूणां, गुरौ गुरुवोः गुरुषु, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः इति गुरु इति शब्दस्य रूपाणि। पुल्लिङ्गे वर्तते अयं शब्दः। पुल्लिङ्गे ये शब्दाः भवन्ति तेषां सर्वेषां गुरुवत् रूपाणि कर्तव्यानि। उकारान्त पुल्लिङ्गः सञ्जातः तथा उकारान्त नपुंसकलिङ्गम् अपि भवति। यथा मधु, तस्य रूपाणि इमानि मधु, मधूनि, मधूनि प्रथमा, मधु, मधूनि, मधूनि द्वितीया, तथा मधुना मधुभ्यां मधुभिः, मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधूनां, मधुनि मधुनोः मधुषु इति नपुंसकलिंगे। संबोधने हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनि। हाँ। Is Madhu Shabda, is it a
नकारांत शब्द. No, 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 no. It is not nakarant. Hmm? Madhu is a ukarant noun. Okay. Next. कर्तृ शब्द, as I told you, कर्ता कर्तारो इति पुल्लिंगे, कर्तृ कर्तॄणि कर्तॄणि इति नपुंसकलिंगे भवति। तथैव अस्मिन् पाठे भवद्भिः किं करणीयम्? ये यानि यानि ऋकारान्त रूपाणि पुल्लिंगे वा स्त्रीलिंगे वा तद् अन्विष्य तत्र ऋकारान्तानां भिन्नम् उकारान्तानां भिन्नम् इति कॉलम निर्मातव्यः। यथा इषुः, गुरुः, तरुः, अ, परुषुः, प्रभुः, बाहुः इति पुल्लिंगे सर्वं पुल्लिंग पुल्लिंग शब्दानां संग्रह एकत्र, ऋकारान्त शब्दानां संग्रह अन्यत्र इति कृत्वा भवताम् अवगमनाय सम्यक् भविष्यति। अस्तु, अत्र यथा प्रदत्तं मस्क्युलिन् मध्ये समेऽपि शब्दाः अत्र सन्ति, किन्तु तैः किं कृतं? ऋकारान्तमपि एकत्रम् उकारान्तमपि एकत्रं तथा आकारान्तमपि एकत्रमेव प्रदत्तम् इति कृत्वा किञ्चित् क्लेशाय एकत्रम् इति प्रयोगः न साधुः। एकत्र इषुः, इषु, इषवः, इषुम्, इषु, इषुन् गुरुवत् प्रचलति। एन एरो, इषु इत्यस्य एरो इति अर्थः। ऋतुपर्णः, इट इज जस्ट अ नेम ऑफ अ किंग। सो ऋतुपर्णः अकारान्त वर्तते, मस्क्युलिन् मध्ये वर्तते इति कृत्वा रामवत्। कपोलः रामवत्। गुरुः, तत्र गुरुः गुरु गुरवः गुरुं गुरु गुरून् इति गुरुशब्दः अस्माभिः कण्ठस्थीकृतः इति कृत्वा तद्वत् समेषाम् उकारान्त शब्दानां रूपाणि कर्तव्यानि। जामातृ इति पितृवत्, जामाता जामातारौ जामातार कर्तृवत् कर्तुं शक्यते। अयं विशिष्यः, जामाता विशेषः भवति खलु, दशमो ग्रहः इति कृत्वा जामातः जामातारौ जामातारः। तडागः, तडागः अ टैंक, पुल्लिंग रामवत्। तरुः गुरुवत्। त्वष्ट्रु ऋकारान्त वर्तते, अयं शब्दः कर्तृवत् प्रचलति, कर्ता कर्तारौ तथैव त्वष्टा त्वष्टारौ त्वष्टारः। द आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स इन द सेंस विश्वकर्मा अथवा विधाता इत्यपि कदाचित् त्वष्टा इत्यस्य ब्रह्म ब्रह्मदेव इत्यपि अर्थः भवति, किन्तु विश्वकर्मा वस्तुतः कारपेंटर वर्तते खलु सः, आर्किटेक्चर। बढ़ई बोलते हैं इसको हिंदी में, त्वष्टा मतलब बढ़ई। दुर्जनः, दुर्जनः पुल्लिंग रामवत्, विकेट पर्सन। देवृ, ऋकारान्त वर्तते, देवा देवारौ देवारः इति कर्तृवत्। धाता क्रिएटर, धाता धातारो धातर कर्तृवत्। नृ नरौ नरः, कदाचित् नरः इत्यपि कुत्रचित् वाक्यं भवति, नरः गच्छन्ति। नरः गच्छन्ति साधु उत असाधु? नरः गच्छन्ति, इट इज साधु ओन्ली। कस्मात्? वस्तुतः नृ इति शब्दः तस्य बहुवचनं, नृ नरौ नरः इति। नृ इति प्रथमान्तं यथा ना, न न अगेन, नृ इति रूट शब्दः, रूट वर्ड। ना नरौ नरः इति प्रचलति। हाँ, पिता पितरौ पितरः आकारः आयाति, ना नरौ नरः इति भवति। परशुः पुल्लिंग शब्द, एन एक्स। परशुरामः पुल्लिंग शब्द रामवत्। ब्राह्मण हीरो हु exterminated the warrior caste. Okay. पांसुः गुरुवत्, पांसुः पांसु पांसवः। पितृशब्द, पिता पितरौ पितरः फादर। प्रभुः उकारान्त गुरुवत्, अ लॉर्ड। बाहुः गुरुवत्, एन आर्म। बिंदुः अ ड्रॉप, गुरुवत्। भर्ता भर्तारौ भर्तारः कर्तृवत्।
बिभर्ति इति भर्ता, हस्बैंड और मास्टर। भीमः रामवत, नेम ऑफ वन ऑफ द सन्स ऑफ पांडु। ओके, भीमः पांडव। भ्रमरः रामवत मनुः, हिंदू लेजिस्लेटर, legislator in the sense, like a government official who creates legislation. oh अच्छा, okay, हाँ, then masculine and neutral gender, ओके, ये वाले नीचे वाले बाद में करते, ऊपर के कर लेते ये हाथ। लक्ष्मणः ब्रदर ऑफ राम, वायुः विंड, विघ्नः an obstacle, विमार्गः a wrong path, विष्णुः the god Vishnu, शत्रुः an enemy, शंभुः the lord Shiva or god Shiva, शिशुः an infant, right, a child। सवेष्टृ, सविष्टा charioteer। अधुना अत्र इमानि प्रदत्तानि सन्ति शब्दाः, प्रदत्ताः शब्दाः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवति। तथा कर्ता कर्तारौ कर्तारः इति पुल्लिङ्गे, कर्तृ कर्तॄणि कर्तॄणि इति न्यूट्रल जेंडर मध्ये, गन्ता गन्तारौ गन्तारः पुल्लिङ्गे, गन्तृ कर्तृ कर्तॄणि गन्तॄणि गन्तॄणि इति कर्तुं शक्यते, किन्तु अधिकः प्रयोगः नास्ति इति कृत्वा पुल्लिङ्गे कुर्मः। अधुना दाता दातारौ दातारः, सियर् द्रष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः, सियर्। द्वेष्टा द्वेष्टारौ द्वेष्टारः, हेटर। रक्षिता रक्षितारौ रक्षितारः, डिफेंडर और द प्रोटेक्टर। न्यूटर जेंडर ओनली, अग्रम द टिप, अश्रु अश्रूणि अश्रूणि अ टीयर, तालु तालूनि तालूनि अ पैलेट, मधु मधुनि मधु मधुनी मधुनि हनी, राष्ट्रम राष्ट्रे राष्ट्राणि, वसु वसूनि वसूनि इति फेमिनाइन ओनली, अमरावती नदीवत, जिह्वा रमावत। एडजेक्टिव्स, क्षुधितः, वन हु इज हंग्री इज कॉल्ड क्षुधितः, तो पुल्लिंगे रामवत, स्त्रीलिंगे रमावत, नपुंसकलिंगे वनम, तो क्षुधितः क्षुधितौ क्षुधितः पुल्लिंगे, क्षुधिताः पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे क्षुधिता क्षुधिते क्षुधिताः, नपुंसकलिंग मध्ये क्षुधितं क्षुधिते क्षुधितानि। तथैव शामः शामौ शामाः पुल्लिंगे, श्यामा श्यामे श्यामाः स्त्रीलिंगे, श्यामं श्यामे श्यामानि इति नपुंसकलिंगे। सप्तविभक्तिषु रूपं प्रचलति। इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स आर देयर, सकार विल गेट विसर्ग, अनेकशः, अनेकशः नाम फ्रीक्वेंटली, टू but not used at the beginning of the sentence. Okay, to will not be used at the beginning because when you add to, you have to make a statement. I am not going to take a class, but I have to. I don't want to take a class, but I will take. So that kind of to will not come in front. It will come as a filler, not filler, but one sentence, one statement you will complete. Then to oppose that or to give some reason, you will say to. But okay, now next, ish dhatu, fourth conjugation, इश फोर्थ कॉन्जुगेशन है, इसलिए इष्यति ऐसा बनेगा। एंड अनु उपसर्ग इफ यू ऐड, अन्वेष्यति इति रूपम भवति, अन्विष्यति एक्चुअली। उकार विल गेट वकार, इन वकार ई विल गो अन्विष्यति इति परस्मैपदी रूपम।
पठतिवत् प्रचलति, अन्विष्यति, अन्विष्यतः, अन्विष्यन्ति, अन्विष्यसि, अन्विष्यतः, अन्विष्यत, अन्विष्यामि, अन्विषावः, अन्विषामः। तथैव गच्छति मीन्स टू गो, अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातु अनुगच्छति, अनुगच्छति टू गो आफ्टर, टू फॉलो। गलति, गलति मीन्स टू ड्रॉप, टू लीक, लीक होना, क्या बोलते हैं उसको, स्त्रवना, दैट काइंड ऑफ गलति, जलम गलति, और इवन किमपि रसः इत्यादिकं। छिद्, छेत्ति इति रूपं भवति, छेत्ति, टू बी कट ऑफ। प्रणयति, प्रणयति, प्रणयति मीन्स टू कंपोज, टू राइट। निनयति, नयति प्र उपसर्ग पूर्वक नयति, प्रणयति, मूर्धन्य नकार विल, इट विल टर्न इनटू मूर्धन्य नकार, प्रणयति इति रूपम। मृ इति परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी का कॉन्जुगेशन वर्तते, वर्तते, तथा तस्य रूपं भवति म्रियते, म्रियते इति रूपम। I have a question for Mriyate. It says passive. Is that passive verb? म्रियते इति तस्य रूपम आत्मनेपदी म्रियते इत्येव कर्तरि मध्ये, तथा कर्मणि मध्ये अपि तथैव रूपं भवति म्रियते इत्यस्य। व्याघ्रः म्रियति, म्रियते, एंड व्याघ्रेण म्रियते। तत्र केवलं संपूर्णं वाक्यं दृष्ट्वा एव कॉन्टेक्स्ट समझ के ही वो कर्तरी है या कर्मणि है वो समझना होता है। So when it says PASS next to that mriyate, that means they are saying it is a passive, right? Yes. Oh, okay, okay. Sorry. It is not mriyate actually. It is a bhru dhatu. Sorry. Bhru dhatu. Oh, sorry. I was thinking. मृियते कैसे चला गया पता नहीं, जो भी है। सो भ्रू इज अ रूट, भरति, भरति इज अ फर्स्ट कॉन्जुगेशन, परस्मैपदी रूप भरति इति। तस्य कर्मणि यदि क्रियते तदा भ्रीयते, म्रियते इत्यस्य यद् उक्तं तत् साधु एव, तत्र कोऽपि समस्या नास्ति, किन्तु अत्र मृ इति धातु नास्ति, अत्र भ्रू इति वर्तते। टाइपो नास्ति, वस्तुतः तेषामपि समीचीनमेव, किन्तु मम एव दृष्टिदोषः सञ्जातः। अस्तु। But that the letter, it's the printing that we cannot quite tell it's bru or mru. Okay. Next is manyate, it is dhatu अनुमन्यते, अनुमन्यते to consent to or the agrees to, like that. मीयते passive structure, माति would be परस्मैपदी, मा माति, माति means to नापना, to measure। निर उपसर्ग पूर्वक माति, निर्माति, निर्माति means to create, परस्मैपदी, but when you make it into passive it would be मा, आकारांत जो भी धातु है, पापीयते, मामीयते, like that, आकारांत धातु will get ईकार in passive structure. So निर उपसर्ग पूर्वक मा इत्यस्य मीयते, निर्मीयते इति रूपं भवति। दादीयते, मामीयते, पापीयते, आकारांत धातु will get ईकार, मीयते, पीयते, दीयते, भ्रीयते, etc. Okay, vanchati, ichchati. This vanchati dhatu we have seen earlier also, in first or second only lesson we had seen. Again it is coming. Vanchati means to desire. It is a parasmapada, first conjugation. Okay, a prefix to words beginning with the consonant and un to those beginning with. Okay, that is simple thing. So if you want to make a
opposite meaning of any word, you will be adding a. If that word is starting with consonant, like a vinashah, you will add a avinashah. Na vinasha iti avinashah. But when you want to make opposite of the word which is starting with a or the vowel, you will add an. For example, ashwah. Ashwa is starting with a vowel, basically. If you want to say that is not ashwa, you will say anashwa. That's it. Okay, with this, sentences are very simple. And why they are simple? Because you already know the ukaranta and rukaranta nouns. So, Shambhur Jayati, Shambhu Jayati. meaning Shambhu wins. the Lord Shiva wins. Bahu Spurataha. Bahu is two bahus, right? So two bahu is what? Arms, hands. Two spuratas throb. Two hands throb or two arms throb. To arm throb. Throb. Dual use. To arm. What did you say? What did you say? Spurataha mean? Throbbing. Throbbing. Throbbing? So Bahuspuranam. It is a kind of shakuna. Ujva, dava, dola, lave, ujvi. If your right hand is throbbing, then that is a good lakshana. It is considered to be good. Is that what you said? Good happens, something good happens. If right hand is throbbing, then something bad. If it is continuously throbbing, then you have to look at the doctor. Right. Vayuna taravaha kampante. So the trees, taravaha, right? Like a guru shabda, taravaha. The trees tremble by wind. Correct. Kampante. Tremble is a continuous or the simple present. Kampante. That is just a statement. Taravaha kampante vayuna. Vayuna taravaha kampante. Bhramara madhu pibanti. Bhramaraha madhu pibanti. So bees, plural. Bees drink honey. Madhu shabda. Madhum iti bhavati va. Madhu iti sadhu. Madhu, I said it as nectar. That is correct only. I am saying madhum iti bhavati va madhu eva. Oh, I see what you're saying. So you're saying it should be dvitiya. It is dvitiya, right? Madhum. Hold on. I have to check. I don't remember that, but madhu. No. Madhum only, but Yeah, it has to be. No, it will be only, na? It will be madhu only. It will be madhu because it is neuter. It is nominative and accusative both. So it is dvitiya is also madhu. Okay. So madhum is not happening because it is not a pullinga noun. It is neuter gender. That's why madhu, madhuni, madhuni, madhu, madhuni, madhuni. So madhu pibanti. That is correct only. also the madhu is a neuter gender. So next time you will remember whenever neuter gender comes, you will not. So I have a quick question on that. So on the previous page, 71 page, they start with masculine and then they have put madhu, or maybe I'm not understanding this correctly. So they do masculine gender, then they do masculine and neuter. No. Here only neuter gender up to vasu shabda. So agra, ashru, talu, madhu, vasu. Actually, there in this between this like यहाँ से ये सवेष्टु विष्णु इसके नीचे एक लाइन होनी चाहिए थी. हम बना लेते ना. ये manu तो obviously is masculine, and then rakshatru is masculine.
वो दोनों जेंडर में आएगा। ये देखो, एक बार समझ लीजिए, यहाँ है ना, मैं जैसा वो घुमा रहा हूँ, यहाँ पे आप एक लाइन कर लेना पेंसिल से, हम्म क्योंकि वो हम्म वाला पार्ट पूरा का पूरा पुल्लिंग वाला है। ठीक है। और उसके नीचे कैसे, कर्तृ गंतृ धातृ द्रष्टु द्वेष्टु रक्षितृ, अप टू दिस सिक्स, या सिक्स, this will go in masculine also, neuter oh, gender, oh, Rakshit, up to Rakshit. And even Strilinga, they will be declined like Kartri, Kartryau, Kartryah, Gantri, Gantryau, Gantryah. Even feminine it will be. Hmm? All the I, all the words. Okay. I, Then I, only neuter gender में अग्र, अग्रम, अश्रु, तालु, मधु, राष्ट्रम, वसु, ये सारे न्यूटर जेंडर में ही आएंगे। और लास्ट में okay. वो केवल स्त्रीलिंग में आएंगे, That अमरावती। makes yes. All right. Okay. Thank you. Started. Thank you. ओके, नेक्स्ट, नरो वसूनि Hmm. वांछन्ति। नाउ सी, That is that naraha, right? Naraha is the plural. हाँ, Nru, na, ना नर, narau, naraha. Naraha vasuni vanchanti. Men desire wealth. वेल्थ, उसका प्लूरल होता है वेल्थ का, वेल्थ्स ऐसा होगा। No. Wealthy रहेगा. वसु वसूनि, वसूनि इति प्लूरल में यदि करेंगे तो, वसु का क्या दिया था, उन वेल्थ ही दिया था क्या? हाँ, wealth का wealth है. Vasu is wealth. 70. इंद्रः शत्रुन जयत्। Indra conquered maybe his enemy or enemies in general. इन, Shatrun. he has lot of enemies, so generalize it. इंद्रः शत्रून् अजयत्। योधोराविषु क्षिपति, संधि विच्छेद। So yodaha arau ishu kshipati. So it's ayadi sandhi is what I found out. Arau plus ishu, au plus e, av. करेक्ट। तो योध, Yodaha arau ishu kshipati. मीनिंग, So ishu is like plural, I think. no, it is not plural. Issue, Because it is like a guru shabda, no issue. decline guru शब्द, Guruhu, guru, guravaha. so it is not plural, right? Dual. But issue, oh, it's dual. Sorry, I meant to say dual and I said plural. ओके, तो ये द्वितीया का डुअल है। योधः, So yodaha arau ishu kshipati means the warrior threw 2 arrows at the enemy. Arau is like on the enemy. करेक्ट। चातको जलस्य बिंदुम अपि न लभते। The bird Chataka does not get even a drop of water. विष्णवे पूजा। No, I have a question about that, because Chatakaha, is it a singular? Because it doesn't, to me, it's like for the bird, 1 drop of water is not given, but they don't say that. They say it in a accusative, nominative case. Chatakaha, like that. I didn't. Like the bird. I would say the bird did not obtain a drop of water. Okay. I guess I was confused. That's okay. It's just simple statement. The bird Chataka does not get even the drop of water.
Okay. Hmm. So the sentence actually is Chatakah jalasya bindum api na labhate, right? Hmm. And Chatakah jalasya becomes Chatako. Chatakah Is pulling that correct? verb, right? Chatakah visarga will change into ukara and it will get utvam gunasandhi it will get, right? So chatako jalasya bindum api na labhate. Simple only. Vishnave puja rochate. So that I did not. The sentence did not make much sense to me when I translated it, because Vishnave is for Vishnu, right? Hmm. For Vishnu, puja is light. I don't know. ओ रोच Puja is हाँ बेसिकली ये ऐसा वाला रोचते वाला जब भी सेंटेंस आता है जिसको पूजा पसंद आती है उसकी हम चतुर्थी कर देते हैं while translating that sentence you cannot say for Vishnu, just say Vishnu likes puja, that would be simple. Hmm? You rochate Okay, because for which word you have to use the chaturthi vibhakti. fourth Yes. Chaturthi Vibhakti. Okay. I know you told us before, but I don't remember. Okay. So Vishnu likes puja. The puja is liked by Vishnu, ऐसा कुछ वो पैसिव हो जाएगा या या यदि सिंपल करेंगे कर्तरी विष्णु लाइक्स पूजा दैट इज फाइन ओनली वैसे ही जनरली करते हैं नेक्स्ट प्रभुभिर्भृत्या आदिश्यन्त Prabhubihi, by the Lord. Prabhu, Lord. लॉर्ड ओनली प्रभुभिः प्लूरल ना Oh, Prabhubi, yes. Lords. Bhrityaha. Servants were ordered by their lords. आदिश्यन्त is a कर्मणि. So the servants were ordered by their lords, by their masters, right? Next, Vishwasya Kartaram Namami. Okay. Vishwasya Kartaram Namami is to the creator of world. I bow down. Aham Vishwasya Kartaram Namami. गुरुभ्यः शिष्यस्य विनयं कथयामि. Gurubhyah Shishyasya Avinayam Kathayami. So I will tell the Guru about the students Avinayam. Indisciplined behavior. विनय मतलब मॉडेस्टी, अविनय मतलब Immodesty. Hmm. Immodesty. Avinaya, immodesty. Have a use immodesty. Okay. So I will tell the so teachers, right? I tell teachers about the pupils The students immodesty. Students is the सीता लक्ष्मणं देवरम कहा गया वो अन्वगच्छत. ओके ऊपर दिया है उन्होंने. सीता लक्ष्मणम सीता देवरम लक्ष्मणम अन्वगच्छत. So I wrote Sita Lakshmanam Devaram Anu plus Agachat. Yan Sandhi I wrote as Anvagachat. So Sita followed her husband's brother Lakshmana. Yes. कन्याया भर्तारम जामातरम वदन्ति. So this was a difficult one. Kanyaya bhartaram jamataram
Vadanti. Vadanti. Who vadanti? Somebody. न जनाः I don't know. तेषां यदि जनाः वदन्ति. जनाः स्वकीयायाः कन्यायाः भर्तारं क्षमातरम् Okay. So it's a simple statement. I got confused. So people say that a daughter's bhartaram husband is the son-in-law. तो Is मतलब that right? हाँ, कन्या के हस्बैंड को जामाता बोल ऐसा- ठीक है भर्तृ I could not make them like ओके नेक्स्ट वन इज भर्त्रे संदेशः प्रहीयते Okay, I could not understand what prahiyate was. Hmm. Bhartre is the Chaturthi Vibhakti, right? The Bhartre is the husband. To the husband, message is sent. प्रेष्यते No. Same. The message Okay. is sent to husband. Husband. When a precise thing is tell or the saying, that time we use Chaturthi Vibhakti, like Kathayami. Gurubhyah Kathayami, not Gurun Kathayami, because particular I'm just precise thing I'm just explaining him or I'm sending a संदेश so भर्त्रे है ना तो रिसीवर जो होगा उसकी चतुर्थी कर देंगे ज्ञान का जो पर्टिकुलर ज्ञान का रिसीवर जो होगा वो उसकी चतुर्थी कर देंगे इवन द्वितीय इज फाइन भर्तारम संदेशः प्रहीयते नार्याः कपोलयोर्नयनाभ्याम् अश्रुणी गलन्ति अरे 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 हाँ नार्याः कपोलयोः नयनाभ्याम् अश्रूणि गलन्ति. So आपने क्या दिया tears मेरी किताब में नहीं वही दिया है मैंने तो खाली विच्छेद कर दिया. नार्याः कपोल इतना छोटा फॉन्ट है कुछ दिखता ही नहीं सर इसमें. कपोल है नहीं मेरे में. कपोलयोर नयनाभ्याम् अश्रूणि गलन्ति सेम है सर. नारी शब्द यदि है तो नार्यः होना चाहिए. तो विमेन हो सकता है कि नहीं. यदि आर्या हैं आर्याः ओके लेट्स से आर्याः कपोलयोर्नयनाभ्याम् अश्रुणि न गलन्ति न आर्याः न वो न गलंती के साथ एक्चुअली ट्रांसलेशन देखते हैं इसका. हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे. पेज Where did you get no galanti? I only see galanti. I don't see an. ओ ये फाइल न आर्याः तो होगा नार्याः न प्लस आर्याः आर्या